You feel, sir? According to you, what should be? Should it be regional or national chapter? अभी तो एक we have a NGO already according to the name of NIRD PGDRDM Alumni Association. We have an NGO created, a society created. Uh, it's a national association. So under that association, do we need to be a regional chapter or a national chapter according to you and Banu? Like it depends on our key players. Like if key person they are comfortable to work anywhere, then then there is no issue. If we don't have people from the different states, then it will be better we can start from the regional and later on it can be Okay. 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 If the people who are in regional chapter are more enthusiastic, then we'll go start with the regional chapter. But we have enough number, as I said, 8 to 10 people from all around the state, then we can go ahead with the national. It won't be a problem. What is Regional the chapter, minimum requirement, sir? Minimum कितना states होना चाहिए? uh, you can start from one also, Okay. there is no problem. But Okay. main thing is that when we are dealing with a nationalized issue, then that that reflects a good image among the any member. If we are talking to some board or some scheme, then they also feel comfortable, like different diversity people they are in the board, and definitely they are having some good intention to work. Way without a national chapter, we will be facing a lot difficulties. I feel without the national assistance, we can't do the things. I think somewhere. Will This be run issue, by purely NIRD students in a cyclic process. right? अभी अभी हमारा टाइम है, हम करेंगे, इसके बाद हमारे जूनियर्स आएंगे और इसके बाद इनके अलावा जो है. So we are ready to create a platform which will be useful and helpful for our audience. Our budget should be defined properly. If we are saying we are doing that, then why only this, not other thing? So that should come from the research. In election we can only select the key three players, like president, secretary and treasurer we can select. Yeah. Definitely I think so. I mean वो नेशनल चैप्टर और रीजनल चैप्टर मेंबर्स ऐड होने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं, बट इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड. So yeah, I think even we need the elections, but it depends on the team members. I think so how many people will Yeah, be coming. the team size which we are going to put up. तो सिर्फ इसको अगर लीड करने के लिए इलेक्शन हो रहा है तो उसके लिए बेटर है, बाकी हर एक चीज के लिए ना करें और फिर वो गवर्नेंस और उसके हिसाब से चल जाएंगी चीजें, और जिसका जो थीमेटिक बेस एक्सपीरियंस है वो उसमें अपना रोल प्ले कर लेगा, एग्जीक्यूट करेंगे. Decentralized planning is concerned. So basically, decentralized planning is like distributed into three-tier system, three-tier of local governance. First is the Gram Panchayat Development Plan. Second is the Block Panchayat Development Plan. Third is the District Panchayat Development Plan. So basically, the contribution of 15 Finance Commission has been like divided into three tier of local governance. Our concept of like getting into this association and that NIRD association is that we can take up projects from the like district and we can include panchayat where they can take sankalp. Sankalp, that means like when I talk about sankalp means like 17 SDG goals has been like localized into 9 themes. And sankalp is something that every panchayat has to take like one sankalp minimum, and at most they have to take 3 sankalp amongst the 9 themes. इसमें काफी कुछ काम कर सकते हैं लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही हैं. तो इसमें एंगेज जब मैं ब्लॉक टीम के साथ में या फिर ब्लॉक लेवल पे जनपद सीईओ के साथ में या फिर कुछ मिशन मैनेजर्स के साथ में अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इन सभी का मैंडेट है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इसमें आ सकते हैं. What are the challenges you are facing, Amay? I mean, Challenges As far as my understanding is concerned, you have to include all the stakeholders that are like working for the children and women, like SHG members that you have said. Mitanin is there, like Mitanin is the health worker.
from the WCD department, Women and Child department. Third is the Anganwadi. Integrate the all the departments at one place with जनपद सीओ, right? अभी क्या हो रहा है कि प्लानिंग एक्सरसाइज को लेकर के मैंडेट इन सबको मिला हुआ है, ये लोग अभी ये सारे के And whatever like objective that you are having, it should be like fulfilled. So that is my like submission. Avnish, I have a point for you. So as you are saying that you are saying that we will be the advocacy agency or we will be the implementing agency. see, I think we must be an implementing agency in this. What is the role of the opportunity for the alma mater, Avnish? According to you, what is the role of the alma mater or this institution we are going to do for this? Basically, like making it a monotonous, it's very much required to make it a duplex. Like getting a feedback from these people, how we can include these people. Because, like, I'll tell you one example. Government have released 13 indicator. See, the tangible aspects government has done till now. So people they are getting enough money. So it's very good to like teach them how they are going to like uh, cook a fish Sorry, instead of like giving a fish to them. sorry. Development plan for us. So that I is want to ask one question, Abneesh. So, what is the role of the alma mater? So, are we designing a guidelines for this? Are we going to implement something? Where are we going to get the funds from whom we are going to get the funds for our resources? If we are, I understand Amaya is working in TRI. I understand you are working for this UNICEF. So, what is the budget where this institution can get and this institution can do? What is the task for us? गाइडलाइंस के ऊपर में या इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में या लाइजनिंग के ऊपर में इंस्टीट्यूशंस के बीच में या कन्वर्जेंस के जगह में किस जगह में आप I बोलने की कोशिश कर रहे हैं अवनीश? आई थिंक ये इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के ये प्रोजेक्ट में हम लोग जा सकते हैं और इसके लिए फंड्स भी मिलते हैं। द पॉइंट है कि लेकिन वो आपको फंड्स कहाँ से क्वालिटेटिव लेने में हैं, नहीं है। है कि ये सारे काम वैसे भी हो रहे हैं ऑन पेपर। द पॉइंट इज ये क्वालिटेटिव काम हो रहे हैं क्या, ये नहीं हो रहे क्वालिटेटिव काम, तो आपका इंटरवेंशन इसमें आएगा, ये मैं गैप बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है। तो अंडरस्टूड। कैन दिस बी अ गैप कि वहां पर क्वालिटेटिव प्लान्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इनकल्शन वो बाल सभा का हो रहा है नहीं हो रहा है, एसएमसीज बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, उनका कुछ इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो ये एक लेवल का जब इंटीग्रेशन आपके जीपीडीपी और प्लान में जाएगा तो वहां से 15 फाइनेंस का कमीशन का पैसा आता है, जैसे उन्हें लेकिन बता रहे थे कि वहां पैसा आता है। गवर्नमेंट मानेगा क्या हमें? हाँ मानता है लेकिन भाई गवर्नमेंट मानेगा गवर्नमेंट के क्योंकि साथ। आप सी तो यू प्रोजेक्ट नीड टू दिया अच्छा है आइडेंटिफाई कि लेकिन वो आपको फंड्स कहाँ से क्वालिटेटिव लेने में हैं, नहीं है। लेकिन आपको फंड्स कौन सी एजेंसी से लेने हैं वो दूसरी एजेंसीज है कि उनको अगर आप रियलाइज कराओगे कि गैप से कि क्वालिटेटिव प्लान्स नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें निकल करके नहीं आ रही है, तो फिर आप उनको बोलोगे कि भैया ये काम हमको करना है, देन वी विल डिफाइन आवर स्कोप कि भैया इस जगह पर इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर ये एक्चुअली में 3 से 4 साल का प्रोजेक्ट निकल करके आएगा कि आप सबमिशन इज दैट कि जीपीडीपी की जो गतिविधि होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज अराउंड ऑन एन एवरेज 70 to 75, including the convergent activities that they have taken up from the different schemes. So if you are going to like analyze this activity, you will get so many things that we can work for the panchayat. So basically there's segregation. They have divided the activity into two parts. What advocacy we are going to give, to whom we are going to give? That we are going to is that in terms of bylaw generation of own source of revenue, Okay. right? Uh-huh. So second is that how we are going to convergent the activities with the different schemes that has been run by the central or the state. और ये पंचायत लेवल Like में the करेंगे, example डिस्ट्रिक्ट that लेवल? I have said, like construction of Anganwadi Bhavan. Yeah, you So don't it go is the into convergent the plan from the NREGA and this WCD, Women and Child Department. नहीं, मतलब हम एक अपर वे में पेपर वे में क्या रहना है वो सोचने के लिए खोज रहा है। आई एम नॉट आस्किंग द डोमेन नॉलेज, आई एम आस्किंग द पेपर नॉलेज विच शुड बी डन। सो पेपर नॉलेज में एडवोकेसी हम लोग स्टेट को करेंगे या डिस्ट्रिक्ट को करेंगे? करेंगे and based on that they will release this इम्प्लीमेंटिंग कैन बी डन इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कि प्लान कितना क्वालिटेटिव और कितना ज्यादा उसको क्या कहते हैं ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। द सेकंड थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट द फंड्स एंड द बजट्स, like we have to pitch this to those organizations who are working or
providing budgets for rural development projects. Like they know everything about My concern is that exactly. let's get into this formulation of this gram panchayat planning. So make it an inclusive gram panchayat development plan. Second is that how we are going to implement at the ground grassroots level, like this collection of this basic data, this formulation of GPPFT. So all these process Feel thing that this we way. can take up with the government. That I'm Correct. like my thing that I. Right. And so I also feel that we need to write a budget proposal for donor agencies and get a budget and work for the deploy the human resources according to it and work on the guidelines or the implementation or the advocacy. So the first thing is formalizing the planning and writing a document and pitching the document to the donor agencies. Right. Right. Got it. So after that, the implementation comes forward. Sir, I Right. guess संसद और ग्राम पंचायत वो if we are talking about that, तो if अगर गवर्नमेंट ने वो चीज मेंशन नहीं की तो हम उसकी एडवोकेसी कर पाएंगे ना. ये चीजें मेंशनड है. हेलो. Yeah, we are listening. Yes, yes, Amay, Yeah. go ahead. तो दिस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज इसको एडवोकेसी ना कहें क्योंकि ये चीज मेंशनड है. Okay. एडवोकेसी को But लेकर के इसमें मेरे इसमें पास एक चीज काफी अलग मेंशन नहीं कॉन्सेप्ट. है. किसमें? इसमें एक चीज मेंशन नहीं है. I have also हाँ. gone through the guidelines that you have shared, PPC guideline 2425. इसमें एक चीज मेंशन नहीं है. जब आप वर्तमान स्थिति का आकलन करते हैं, उसमें जब आप ये हाँ. पूछते हैं कि आपके पंचायत में कितने बच्चे 0 से 5 वर्ष के हैं, उसमें उन बच्चों का आकलन नहीं है, उस बच्चों की संख्या नहीं है जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं. Just one thing. So maybe about the project, once we get the project, once we are like stabilized, once the institution is formed, maybe we can have a detailed discussions like this. Yes. But for now, for at least for this week and next week, maybe let's focus on the building of institution. मतलब पहले कौन कौन रहने वाला है, क्या क्या करने वाला है, बेसिक तो बनाएंगे. Later maybe we'll have a detailed discussions on these things is what I Okay, so think. what I'm trying to say is, if we are forming something like, what is our strength, what we can do, what we guys as a development. अच्छा अच्छा अच्छा. Wait, actually we are all maybe most of us Alma Matter is good at project implementation monitoring also. So what kind of projects we are good at? So one is like GPDP. GPDP is one of the strength. Mine is rice. Mine is paddy and rice. I can be in post harvest losses, PHL losses. So Oh, this. is it? Okay. So Avnish is in development plans. So this is Okay. another strength. And And आपका Ramadevi garu. Maybe you can write about Mary strength ki rural enterprise you can write. So it can be of any kind of small, mini and micro enterprise and any other than the rural enterprise. or startup. Hmm. That's from my side, yeah. Okay. 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 You are interested in livelihoods. That's fine. What? What is it? Livelihoods. Livelihoods. Yeah. So gaps identification kuda చేస్తున్నాము మనం already. Like Abnish was saying, GPDP has a gap, so he is identified both one. So even I found out rice is one of the gap we have, and we have the strength. I have some grip on that where we can intervene. So that is one area, and under this we will be speaking in the next call. But what are these Okay. स्ट्रेंथ से अलावा गैप से अलावा हम लोग और क्या देखना चाहिए रोड मैप बनाने के लिए रोड मैप बनते समय उन लोगों का बोर्ड का स्ट्रेंथ्स को देखेंगे बट उससे अलावा कहाँ देखेंगे एक फंडिंग एजेंसी को डोनर एजेंसीज को पकड़ेंगे क्या हम लोग फिलांथ्रफी को पकड़ेंगे क्या पहले हम प्लान में या फंड राइजिंग भी देखना पड़ेगा फिर विदाउट या रेजिंग for फंड. sure. ओके. फंड राइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आफ्टर फॉर्मिंग अवर ग्रुप. तो ये फंड रेजिंग के लिए मतलब हम लोग ऐसा प्लान कर सकते हैं कि अभी हम लोग एक गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे और डोनर एजेंसी को पिच करेंगे जैसे कि इंटरनेशनल हो गया या नेशनल हो गया जो भी ग्रांट्स हो गए और हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे आप यही बोल रहे हैं. एंड इसके लिए पहले 2 years का ग्राउंड वर्क वो भी मेन चीज है. इट्स नॉट राइट अवे वी आर जंपिंग इनटू इट. Surinder ji, can you make Banu ji understand about the 3 years experience of an NGO?
is it a difficult process for the 3 years to get an experience for an NGO? I think today we had good discussion after Okay, long time. you Yes, can yes, today we discuss had really good discussion. that. Okay. Because that thing we need to understand Hmm. like what are our capacity and where the gap. Right. The schemes are there, funding there, institution, government institution they are working, but still we are. हम पूछ रहे थे कि सर सुरेंद्र सर बानो जी को और अभिनीश को जानकारी समझ में नहीं आया कि एनजीओ का एक्सपीरियंस जो शुरुआत वाला एक्सपीरियंस है वो कैसा मायने रखता है। वो लोगों को ये समझ में आया है कि इट इज इम्पोर्टेंट, द 2 years or 3 years is experience is important, but the experience will for sure come. They are in a dilemma, that how will the experience come, like which you gave a brainstorming talk in the earlier time of our introductions। हम मैंने पहले आपसे बात करना शुरू किया तो आप मुझे समझाए थे शुरुआत में कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा एक एनजीओ को। नहीं देखो अगर हम इनिशियल में बात करें तो हमें देखो कुछ नया क्रिएट करने से बेटर है कि हम कुछ विजन लेके चले। विजन जैसे अभी 2020-30 जो है ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड आफ्टर 7 ईयर। तो अभी जो गवर्नमेंट है या जो यूएनडीपी है वो 2050 पे वो प्लान कर रही होगी। तो हमारा कहीं ना कहीं जो है हम जो थॉट प्रोसेस रखते हैं हम उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए थॉट प्रोसेस रखे आगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक हमारा एक विजन समझ में आएगा सबको। और दूसरा जीपीटी भी बन गई है, ठीक है, जैसे अभी डिस्कस हुआ बीच में कि काफी ऐसे चैलेंजेस हैं जो सारी चीजें हैं। ग्राम पंचायत है लेकिन हम देखते हैं ग्राम सभा नहीं हो रही है, सोशल ऑडिट नहीं हो रहे हैं। हम बोलते हैं कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं विलेजेस में लेकिन कोई वो फंक्शनल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल जेजेएम स्कीम का ले लो, पीडब्ल्यूएससी जो कमेटी बनी हुई है लेकिन कौन ऑडिट कर रहा है, कौन उसको देख रहा है, कैसे मॉनिटर हो रहा है, वो सिर्फ प्रधान सेंट्रिक है या सरपंच सेंट्रिक है। तो काफी ऐसी चीजें हैं लेकिन हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। देखो अगर हम उसमें उसके अगेंस्ट में जाके कुछ करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी विलेज के लिए अगर कुछ विजन प्लान बना सके, 5 ईयर प्लान या 10 ईयर प्लान किसी भी ग्राम पंचायत के लिए, और उसको कैसे हम सेल्फ डिपेंडेंट कर सकते हैं, तो उसको हम जीपीडीपी से और अदर कन्वर्जेंस से कनेक्ट करें। उससे क्या होगा, हमें जितने भी जो सिस्टम में जो लोग हैं, चाहे वो वीडियो हो गया, चाहे वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गया, चाहे ग्राम प्रधान हो गया, वो सब हमसे जुड़ के हमें ऐड करके आगे चलेंगे और हमारा काम करने का जो तरीका है वो आसान हो जाएगा। जो बट कि फर्स्ट डिफरेंट ईयर, स्कीम में हम देखते हैं। बट अगर मान लीजिए कि फर्स्ट शुरुआत वाला एक्सपीरियंस, जैसे कि अभी थर्ड पार्टी का प्रोजेक्ट हम आपसे ले रहे हैं सर, वो प्रोजेक्ट के राइट। हिसाब से फर्स्ट प्रोजेक्ट में उसमें कैसा दिक्कतें आता है हम लोगों को। अगर मान लीजिए फरवरी आ गया, फरवरी में हम लोगों के पास एक एनजीओ है, मार्च में हम लोगों को पहली प्रोजेक्ट लेना है। पहली प्रोजेक्ट कैसे आएगा? डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग जीपीडीपी को पंचायती राज को पिच करेंगे या यूनिसेफ को पिचिंग करेंगे या हमें यूएनडीपी को? मल्टीपल नॉट वन और मल्टीपल टू, को करेंगे। we need to first understand the gap. Just I'm telling, first we have to do the research and based on the gap we have to make the plan, and Right. plan should be in such a manner so it should be roll out whole year, not for the Feb or March or something. It should be roll out throughout the year. So we having multiple dimensional work also and funding opportunity also. Right. Example, like every year government they also doing the monitoring, internal monitoring. They also still many government scheme that documental process in progress. Like I also did the NLM in 14 state, national monitoring of all government schemes. And they have prepared certain documents to monitor the schemes, to evaluate, to judge how their progress and all, how we can put the suggestions. So such thing also can be upgraded by us. Okay. Okay. So like in the running phase, like scheme is running, we should understand how they are managing the document, where is the gap, how they are, quantitative, qualitative aspect, how they are measuring, and where they are facing the problem. Either the gram panchayat level, resources they are skillful or they need a skill upgradation. So based on that also we can put. We can also develop the app through which where we are working on that we can track their performance in day-to-day basis. We can also showcase the dashboard to the concerned authority in government.
So through which we can showcase our presence, and also we can make the difference. और ये थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं Third सर? party, once we will affiliated with the government, automatically from the CSR we can easily get, because Right. CSR person, they also want to work with the government. They also want recognition from the government. Hmm. So if we having certain good ground, automatically we can get the numbers of projects. Right. Because getting the fund is not problem. But yeah, approach is the essential thing, and which we have to define. Right. Right. Another point I want to get clarify for the people from you is जैसे कि अभी आपने मान लीजिए आपका एनजीओ को एक प्रोजेक्ट मिल गया, तो वो प्रोजेक्ट हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करें सर? Like suppose अरे मतलब एग्जाम्पल मतलब कोई और एनजीओ को प्रोजेक्ट मिल गया, तो वो प्रोजेक्ट को वो लोग किसी और को देना चाह रहे हैं, किसी और के साथ इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ हो गया, साउथ में हम लोगों का प्रेजेंस है, जैसे कि उस समय बात हो रहा था ना सर, हम लोग आप बोल रहे थे कर्नाटका का प्रोजेक्ट के हिसाब से एग्जाम्पल, तो हम समझाने के लिए ग्रुप को एग्जाम्पल करने के लिए समझा रहे हैं. like many times what happen, some partner agency they don't want third party. In such case, it's difficult to and give the project for the implementation. But yeah, as a resource agency or some internal deal we can sign and we can do. Yes. मतलब आप बोल Okay. रहे हैं कि third party project लेना एक it's not a big task. Taking care Yeah, of this is not project a for big a task. yeah, it is a very easy and a crucial task, but it's not a difficult task. You are saying, right? Yes. Okay. Okay. I hope Banu Garu, you got something according. Suppose I'm just saying. Like suppose Marada is working. Marada is working, then other Ismail Foundation is working. Many NGOs they are working across the countries, and they are having many projects, and for that they require the agencies. Okay, and we think we having good hold in Hyderabad or Telangana or Bhopal or somewhere else. So we can accordingly we can identify and we can take up such projects. We can also take the government projects where they required some survey agency and some evaluation agency. Yeah. And once we will qualify, then automatically we can also empanel with them. So frequent projects we can get from them. What else we need to look at? Like roadmap, again I will come to the research part. Research is essential. What are the key points through which we can connect with the most of the government agenda and also CSR agenda? If we can, make our planning and our roadmap, we can also prepare the vision. हम लोग किसमें रजिस्टर करने की सोच रहे हैं? क्या हमारी इस पर क्लैरिटी बनी हुई है? नहीं, ये भी Yes, थोड़ा sorry for dialogue interrupting. रजिस्ट्रेशन हम करना कोई big deal नहीं है. February डेज में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो सारी चीजें हो जाएगी. लेकिन उसके लिए जो विजन मिशन जो हमें प्लान करना है. हेलो. एग्जैक्टली आवाज आ रही है? हाँ, विजन मिशन जो हमें प्लान करना है, वो हमें पूरा ये जो डेस्क रिसर्च है ना उससे निकल के आना चाहिए. but our plans are good. But jumping directly into Section 8, will it be feasible or not? It is just one question in my head. इट विल बी डिपेंडेंट ऑन कि हम कौन से प्रोजेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं. Right. सिंपल. तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है. दूसरे अगर सोसाइटी में भी करना है वो भी कर सकते हैं, बट हम कौन से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं उसको लेकर के हैं. तो दोनों ही चीज है, ऐसा कुछ वो नहीं है. यही मैं कह रहा था कि अपन किस तरीके से लेंगे तो फिर वो निकल जाएगी चीजें. पास आउट्स आ रहा है, उस पास आउट्स के लिए संस्था नहीं है. हर बंदा के पास इंडिविजुअल कैपेसिटीज है. जैसे कि एक प्रोफेसर जो है वो एक हाँ वो आर्टिकल. आई गॉट इट. सही है वो, मैं समझ रहा हूँ चीज. उसमें तो वो नहीं है. वही मैं सोच रहा था कि किस तरीके के हम लोग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं. दैट्स वेरी फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Yeah. So it is not according to the
activities of the institution. It is about the requirements of the alma mater. What is required for the alma mater? Is it required? Section 8 is required for the alma graduates, or society is required for the alma graduates. In that perspective, I support for section 8. But there are lot compliances which we need to fulfill for the Companies Act. So in that I am dilemma. स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग, सुरेंद्र जी और बानू जी? I don't think so people will be coming. If they come also, it will be add on. I think we can continue first now.